Okay, dear students, I hope this image is visible to both of you. Isn't it? Please do let me know so that I can just proceed further. Yes, sir. Okay. First of all, now why I'm sending this with the help of an image is only because firstly we'll be doing what we'll be simply going for the content study, right? Initially, what we will be doing is we'll be going for the content study, and later on we will be moving forward. What the basic thing we'll have to keep in our mind what basic thing what we'll have to keep in our mind that once again I'll be uploading the image. We'll simply be going through with the content of the chapter. Now, first of all, that is very important to understand the basic content which are there in the chapter. So this chapter is chapter number 6 of your NCERT. First, let me tell you. Let me remind you what the previous topics what you discussed. Chapter number 1 of your NCERT class 12, which you have discussed, was related to electrostatic force and electrostatic charges and field. This was your first chapter. The second chapter which you completed was electrostatic potential and capacitance. The third chapter which you completed was electric current. Fourth is magnetic effect of current. Fifth is magnetism. Then we moved to part 2, but right now we are stopping. Part 2 is only because you already know that this year the pattern will be 2 terms pattern. I hope both of you know. I hope all those who have joined the class are already knowing this particular fact. So CBSE this year has designed a different format. According to CBSE, a few chapters are taken for term 1 and the remaining few are taken for term 2. So accordingly, we will have to keep in our mind that what CBSE is asking and demanding for term 1, only that we will be moving with forward. So dear students, in the same race, after chapter number 5, that was magnetism, we are moving forward with electromagnetic induction. This is your chapter number 6. Now, what is chapter number 6 is all about? Chapter number 6 initially begin with magnetic flux. Chapter number 6 initially begin with magnetic flux. Now, here is the concept of the magnetic flux, which is already depicted with the help of a definition. First of all, let me tell you what is a flux. The first thing which we will have to understand is called flux. Now, what is flux? If I talk about flux, then flux simply indicates flow. Flux simply indicates flow. For example, if water is flowing, you call it to be as water flux. If current is flowing, you can call it to be as current flux. So whatever is flowing is known as flux. When the electrostatic field lines flow, you call it to be as electrostatic flux, or electric flux. But when magnetic field lines are flowing, dear students, we call it to be as a magnetic flux. We call it to be as a magnetic flux. Now, further, let us talk about the magnetic flux. The number of magnetic flux through any closed surface or surface is a magnetic field. In a magnetic field, is total number of magnetic field lines of force crossing the surface normally. In simple word, if I say, if we'll be having a surface, let us take this to be a surface. And these are the magnetic field lines which are passing through the surface, right? And they are passing normally to the surface. What is the meaning of normal? Is perpendicular to the given point of the surface. So if you simply say the number of magnetic field lines, these are what magnetic field lines, and they are passing through the surface area normally. At every point, they are making an angle of 90 degrees. So dear students, what is a magnetic flux? Magnetic flux is defined as number of magnetic field lines passing through the surface area now. Once again, if you'll be having a surface and you'll be keeping that surface in the magnetic field, so what will happen? Magnetic field lines will pass through it, and the number of magnetic field lines which are passing through the surface is known as the magnetic flux. The more amount of magnetic field lines passing through the surface area will produces more magnetic flux. So it entirely depends upon the number of magnetic field lines which are passing through that given area of the surface. So because it is very clear that it is the number of magnetic field lines which are passing through the given area of the surface, so it is very clear that we should take magnetic field lines and area into the consideration. So here it is written phi. If you see, this is phi. This is phi. And what is phi over here? This phi represents magnetic flux. So what is magnetic flux? It is number of magnetic field lines, that is B. Now what B represents? B represents the magnetic field line or magnetic field.
And what is A representing here? A represents here the area of the cross section of the given conductor. So dear students, it needs to be very clear to us that is what is phi. Phi is equal to number of magnetic field lines, that is B, passing through the area, that is capital A, norm. So what flux is? Flux itself is, my dear students, is a scalar quantity. Flux itself is a scalar quantity. In the diagram, first of all, we will talk about this vector and scalar quantities later on, but right now let us talk about this diagram. If I talk about this diagram, if you see from here, there are two different cases. In the first case, the field lines, which is case A, already shown in the diagram, magnetic field lines are passing through the surface area, and the normal of the surface area is in the same direction of the field line. But in the second direction, this surface is, instead of being straight, is tilted to some angle. And because there is a tilt in an angle, so the normal will be theta angle with the field, because field is passing exactly in the horizontal direction. So it is a little tilted. Let us suppose the theta be an angle of tilt. So the normal will be at an angle theta. So this is what this particular diagram depicts. So in the first and the second case, there is a difference. What is the difference? In the first case, the magnetic field lines and the surface. If you see, simply surface is kept vertically and magnetic field lines are passing horizontally, making exact 90 degrees. But in the second case, because there is a tilt, surface is not capped vertical, but it is tilted to an angle theta. So the normal will be along an angle theta with the horizontal axis. So here normal is making an angle of theta with the given horizontal axis. So now what is happening here in the two cases? Because this two cases has to be studied nicely. Let us talk about this case. Here I am writing phi is equal to B cos theta with A. Now let me clear you one important fact, that flux is a scalar quantity. It is not a vector quantity. And how can you get the scalar quantity? Is by having the dot product of two vector quantities. You already know the field. All the fields in this world are directive, and because they are directive, so they are called to be as vector. In most of the cases, in almost all the cases, I'm not saying all the cases, in almost all the cases, fields are always vector. And here we are taking area to be an area vector. Now, why I am taking area vector is because this area is normal to the given surface. So, dear students, I am writing here B cos theta with A. Now, why this cos theta is represented over here? Because cos theta will be uh, interchanged with a dot, because you already know vector dot vector can be written as vector cos theta with a given vector. And here magnetic field is making an angle theta with the normal of the surface area. If you see from here from the diagram, it is very clear that magnetic field is making theta angle with the normal of the surface area. So what I'm doing is I'm simply writing it over here, right? If you see from here, it is written over here. So phi is equal to B cos theta. It means magnetic field is making an angle theta. So I'm writing here B cos theta with area normal. So it is very clear. It comes out as what? BA cos theta. But this cos theta actually is with magnetic field. So I'll be writing here B cos theta with A. And when I remove cos theta, I'll have to place here dot. And once when I place here dot, so it will be B vector dot A vector. So it is very clear to us that flux is equal to B vector dot A vector. Here B vector represents the magnetic field and A vector represents the normal to the surface area. Now here the direction of vector A is in the direction outward drawn normal to the surface. So it is very clear. We already have seen that the direction of the A is always normally outward. It is always normally outward. It will be coming out of the surface. Normally outward means surface से perpendicular और किस direction में बाहर की तरफ. ठीक है? In general, the field B vector over an area may be uniform. However, over a small area element dA vector, field B vector may be assumed to be uniform, as shown in the given figure 6.2. If you simply see this figure 6.2, now let's talk about this figure 6.2. This is not a uniform figure. It will be very clear that it is not a uniform figure, right? It is some what we call the combination of some non-uniform areas. So here we are taking a small area dA.
And the normal of dA will be given as already depicted in the diagram, theta at an angle theta with a field. So dear students, what is happening over here? You are here, the component of the field will be v cos theta and the area normal will be A vector. So it is very clear that in this particular diagram, because this is arbitrary surface, it is not a fixed surface. So here you can get the value depending upon the theta, you can get the value of the phi. So now let us talk about the next point. Let us talk about the next point. Let me add another let me share another pic with you people. Okay, dear students, in case if it is visible, please let me know so that I can start the explanation. Is this image visible to you? Please let me know. Yes, sir. Okay, okay. Dear students, initially I'm taking only the pics, right? I'll be explaining you with the help of the pics, but later on we'll be moving with the handwritten notes, right? And then we will be moving with the numerical. So first of all, let me clear you what is there in the chapter first, right? First, let us talk about this. Flux through any element dA vector is d phi, that is equal to magnetic field in the perpendicular direction multiplied by dA, which is written to be as b cos theta with dA, or you can write bdA cos theta, or you can write b vector dot dA vector. So this is the value of d phi. Now why I am writing here d phi? Previously you already have written phi is equal to b vector dot a vector. Now the basic reason for writing here d phi is only because here the surface area is not uniform, but it is an arbitrary. If you see the previous diagram which we uploaded the pic previously, you can simply find out that particular area is not of uniform symmetry. So here, because the area is not of the uniform symmetry, so we can take it to be as d phi. So here I'm writing d phi is equal to, if you simply see, it's coming out to be as b vector dot dA vector. Now, b vector will always remain uniform. Why? Because the field provided will always remain uniform. What will change? Area. Area will be changing. So variable quantity is area. So I'm writing here dA vector. So it comes out to be as what d phi is equal to b vector dot dA vector. Now, if you want to remove d, if you want to remove differential coefficient, what you will have to do, you will have to integrate both the sides. So integration of d phi will make it to be as phi. Integration of d phi will make it to be as phi. And on the other hand side, it means on the right hand side, when you integrate it with the area. So you'll be writing here b vector dot dA vector. So this is what we will be getting, dear students. So this is the case when we will be talking about for an arbitrary case. This is the case when we will be talking about arbitrary surface. Arbitrary surface means non-uniform surface. So phi is equal to b dot a. Phi is equal to b dot a, and when it will be b dot a is only when you are having uniform surface. When it is a non-uniform surface, you can take it to be as d phi is equal to b vector dot dA vector. So this is what you'll have to keep in your mind. For uniform surface, you can take it to be as phi is equal to b vector dot a vector. And if it is non-uniform surface, you can take it to be as d phi is equal to b vector dot dA vector. Now let us talk about the dimension of magnetic flux. Dear students, you already know phi is equal to b. And you already know by the Lorentz equation, F is equal to B QB sine theta. Right? You already know F is equal to B QB sine theta. In the previous expressions of the chapter, you already know an expression of the Lorentz force, that is F is equal to B QB sine theta. From that expression, you will be getting B is equal to F upon QB sine theta. So now, dear students, if we'll be placing here the value in the first expression, phi that is equal to BA, if we'll be placing the value of B, that is F upon QB sine theta, expression comes out as what phi is equal to F upon
QV sine theta multiplied by A. You already know the dimension of the force. In case if not, I tell you. The dimension of the force is mLT to the power minus 2. The dimension of charge Q, the dimension of charge Q, you can write it to be as AT, right? AT, or in the form of unit, you can write it to be as C, right? And V, the dimension of velocity. The dimension of velocity is what? LT inverse. And sine theta is a dimensionless term. And area, which is in the multiplication, you can take it to be as L square. When you simplify it, my dear, instead of writing C, right, CT inverse, instead of writing CT inverse, you can write it to be as A, because A means Q is equal to I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. So Q is equal to IT. I is current, T is time. So it makes what? I into T means ampere, right? Q is equal to IT. Please just pay attention. Q is equal to IT, right? Because I is equal to Q by T. Here I'm writing the thing so that it will be clear to you. I is equal to Q by T. So Q is equal to IT, right? So this is what we know. Now this is ampere. Current, the dimension of current is ampere, and the dimension of time is T. So you will get Q is equal to 80, right? Q is equal to 80. So if you already know this, let's move to the next. So the next thing about which we will be discussing, let me take you to this. So here I'm writing C, that is charge, is equal to 80, and then you will be having LT inverse. So AT and LT inverse, right? AT and LT inverse. So T and T inverse will be cancelled. You will remain with A in the denominator, and that will be multiplied by L square. So the denominator of L will be cancelled with the L square, right? So what is remaining here? ML square T to the power minus 2 A. So if you'll be placing here the dimension of charge, that is AT, dimension of velocity, that is LT inverse, sine theta, that is 1. Why it is 1? Because sine theta do not have any dimension, multiplied by the dimension of area, that is L square. When you cancel it, the dimension comes out as what? ML square T inverse T to the power minus 2. So dear students, this is what the dimension of the flux is, right? In a few competitive examination, you can simply find out, simply they'll be asking about the dimension. Now let us talk about the next thing. The next thing about which we will be discussing today is the SI unit of magnetic flux. Now, after going through with the dimension of the flux, let us talk about the SI unit of the magnetic flux. So, my dear students, the SI unit of magnetic flux is Weber, right? The SI unit of magnetic flux is Weber. Let us be very clear. The SI unit of magnetic flux is Weber. Now, how can you define 1 Weber? How can you define 1 Weber? You already know phi is equal to B into A. Phi is equal to B into A. I hope you already know this. Phi is equal to B into A. We already studied. Now, the unit of B is Tesla, and the unit of area is meter square. Flux, that is Weber. Flux, that is Weber, is equal to 1 Weber is equal to 1 Tesla into 1 meter square. So this is already known to us, right? This is already known to us. So here what I'm doing is, let me explain you the concept. If we'll be going here, so 1 Weber is equal to 1 Tesla into 1 meter square. So 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. This is already always we need to know. So dear students, one thing needs to be very clear, that the SI unit of the flux is Weber, and 1 Weber is equal to 1 Tesla into 1 meter square. Now, how can you define it? If anyone may ask you, in SI term, define it. So how can you define 1 Weber? So 1 Weber is the flux produced when a uniform magnetic field of 1 Tesla acts normally over the area of 1 meter square. Now let me explain you how. So if you'll be having a magnetic field whose magnitude is 1 Tesla, and you'll be keeping a surface of 1 meter square in that magnetic field, then the flux it will be experiencing will be 1 Weber. So it needs to be very clear to us that what is 1 Weber. In SI term, 1 Weber is when you'll be keeping a surface area of 1 meter square in the magnetic field of 1 Tesla, then the flux it will be experiencing is known to be as 1 Weber. Now let us talk about in CGS system. When I talk about CGS system, the CGS unit of magnetic flux is Maxwell. Right now, what is 1 Maxwell? You already know phi is equal to BA. Phi is equal to BA. When I talk about CGS, the CGS unit of
magnetic flux is Maxwell, CGS unit of magnetic field is Gauss, and the CGS unit of area is centimeter square. So I should write here 1 Maxwell is equal to 1 Gauss into 1 centimeter square. That means 1 Maxwell is equal to 1 Gauss centimeter square. Now, if you see from here, 1 Maxwell is the flux produced when uniform magnetic field of 1 Gauss acts normally over the area of 1 centimeter square. Now, if anyone may ask you, how can you define magnetic flux in terms of CGS system of units? Then you can simply say, sir, let us take a unit area that is 1 centimeter square, and let us keep it in the uniform magnetic field which is directed normally to the surface, whose magnitude is 1 Gauss. Then that surface area will be experiencing the magnetic flux, and that magnetic flux will be equal to 1 Maxwell. So if you are having an area, unit area, or you can say to be the area of 1 centimeter square, and you'll be keeping it in the uniform magnetic field which is directed normally to the surface, right, of 1 Gauss, you'll be keeping this area in this field, then the flux this area will be experiencing is known to be as 1 Maxwell. So Maxwell is the CGS unit, as well as Weber is the SI unit of the magnetic flux. So now this is what we need to keep in our mind. Now anyone may ask you that what is the relation? What is the relation between? What is the relation between? Let me move in forward. Okay. What is the relation between Weber and Maxwell? Let us talk about it. You already know Weber is a CGS unit, Maxwell is a Weber is the SI unit, and Maxwell is a CGS unit. I'm sorry, correcting it. So dear students, now let's talk about it. So 1 Weber, which is equal to 1 Tesla into 1 meter square. 1 Tesla contains 10 to the power 4 Gauss. Now let us be very clear. Let us be very clear. Now what we need to be clear with, that 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. What is Gauss? Gauss is the CGS unit of magnetic field. What is Tesla? It is the SI unit of the magnetic field. So 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss, dear students. 1 meter square can be written 10 to the power 4 centimeter square. 1 meter square can simply be written 10 to the power 4 centimeter square. When you'll be simplifying it, when you'll be multiplying the two terms, you get it to be as 10 to the power 8 Maxwell. Now Gauss into centimeter square makes Maxwell. So 1 Weber is equal to 10 to the power 4 Maxwell. So this is what one should always remember. Dear students, there are two different types of flux which we can see in our day-to-day life. First one is a positive flux and another one is a negative flux. Now, if anyone may ask you how to define positive and the negative flux, dear students, you can simply say that if the magnetic field is in the direction of the normal of the given surface, pay attention again. If you will be having a surface and its normal is there, and normal is directed outward, magnetic field is directed in the direction of outward side, and if both of them are having the same direction, it means normal of the given area and the magnetic field, if they are in the same direction, you can say it to be a positive flux. But if they are anti-parallel to each other, then you can say it to be a negative flux. Let us be very clear. Let me remind you again. If the direction of the normal of the area is in the direction of the magnetic field, pay attention again. If the normal of the area is in the direction of the magnetic field, then you can say it to be as a positive flux. But if the two are in the opposite directions, you can say it to be as negative flux. So this is one should always keep in mind. Now let us talk about the next thing. I'm sorry. What is electromagnetic induction? Here are some basic things which are associated with the electromagnetic induction. Now, electromagnetic induction, if we talk about, is like it was initially told to us regarding it. Initially was told to us by Michael Faraday in 1831, as already written over here. You can simply check out the statements mentioned. The phenomenon of electromagnetic induction. Now, let's talk about the basic definition of it. These are the historical concepts. Anyone can easily read it and can understand it. The major important point here is this, which I'll be marking over here. This is the major important thing, right? That it was found out by Michael Faraday in 1831. That is very important. We need to know, right? Let's talk about the next thing.
almost one more person's name is associated here, that is Joseph Henry. And we will surely be talking about Joseph Henry, but Joseph Henry we will talk in the segment of self-induction and the mutual induction. But here we are only concerned about the electromagnetic induction. So we are talking the very important name here, that is Michael Faraday. So let's talk about it. So what is electromagnetic induction? The phenomenon of production of an induced EMF and hence induced current due to the change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. Once again, let me tell you the definition again. The phenomenon of production of induced EMF and hence induced current due to the change of the magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. The phenomenon of electromagnetic induction is of great practical importance in daily life. It forms the basis of the present day generators and transformers. Modern civilization owes a great deal of discovery of electromagnetic induction. So dear students, now let me explain you what actually the electromagnetic induction is. Electromagnetic means the two different fields are associated to each other. Electromagnetic field is always a field which is means electric field is producing the magnetic field or the magnetic field is producing the electric field. So usually what we talk about is that here what is happening when the current is flowing, magnetic flux will be produced, and due to the magnetic flux, induced EMF will be produced in the coil. So what is happening here? Initially we are supplying electric field, then the magnetic flux is producing, right? And because of the magnetic flux, induced EMF is producing, right? So this is the thing what we'll have to keep in mind. Three things are happening. Primarily, let me tell you what is electromagnetic. Electromagnetic simply means that the two fields, electric field and the magnetic field, are linked together. Always we need to remember that the electric and the magnetic field are always mutually perpendicular to each other. It means if anyone will say that if electric field is moving along the x-axis and nothing moves along the z-axis, if electric field is moving along the x-axis and nothing is moving along the z-axis, then in which direction the magnetic field will move? Pay attention again to the question. Question is simple, that is, if in the x-axis electric field is moving and nothing is moving in the z-axis, then in which direction the magnetic field will be moving? In the x-axis or in the y-axis? So your answer should always be y-axis. Now why it should be y-axis? Is because electric and the magnetic field always move mutually perpendicular to each other. So this is one should always keep in his or her mind. That electric, when I talk about electromagnetic field, it means electric field is perpendicular to the magnetic field. Now here one important point comes out is induction. Induction simply indicates because of the electric field, magnetic field is getting induced, or because of the magnetic field, electric field is getting induced. It simply indicates because of the one field, the other field is getting induced. Induced means what? Getting produced, right? Because as that particular field is coming into the picture, another field is also getting linked to. This phenomenon is called induction. इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक फील्ड आपके नजदीक आ रही है, उस फील्ड के कारण दूसरी फील्ड लिंक हो जाए या फिर बन जाए, तो आप उसको इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन का वास्तविक मतलब क्या होता है? जैसे आपने मैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, आप एक मैग्नेट को दूसरे एक आयरन की फिलिंग के नजदीक लेके आते थे, आयरन के पीस के नजदीक लेके आते थे, तो जो आयरन का पीस होता था वो मैग्नेटाइज हो जाता था। इसको इंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज को गेन करना इंडक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया कहीं पे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, बन गई, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, मोटिव मींस मोशन, फोर्स। वो फोर्स जो चार्ज को मोशन कराए सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई और आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉजेस द करंट, राइट? Induced EMF causes potential difference and potential difference causes current. So ultimately, induced EMF causes current, right? The phenomenon of production of induced EMF and hence induced current due to the change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction. फिर से ध्यान दीजिएगा, the phenomenon of production of induced EMF due to the change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction. तो यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। एक आपने सर्किट लिया, क्लोज सर्किट, उसमें उससे लगा हुआ अटैच्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। उसके बदलने के कारण क्या हो रहा है?
इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। फिर से सुनिए, एक क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्किट एरिया। तो एक क्लोज सर्किट है, उस सर्किट से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। वो क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। और जब वो बदल रही है तो क्या हो रहा है? बदलने के कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एक क्लोज सर्किट पे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के कारण, एक क्लोज सर्किट लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का बनना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। फिर से सुनिए, एक क्लोज सर्किट के से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक क्लोज सर्किट से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जब बदलेगी, एक क्लोज सर्किट से लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन हो। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So this is one should always keep in his her mind, right? Now let us talk about the next. Now इसको डिपिक्ट किसने किया? इसको सबसे पहली बार प्रैक्टिकली किसने बताया हमें? तो माइकल फैराडे का नाम आता है। The phenomenon of electromagnetic induction was discovered and understood on the basis of the following experiment performed by the Faraday and Henry. तो यहाँ पे जो जोसेफ हेनरी है और जो माइकल फैराडे है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके आधार पे ये पता लगाया जा पाया कि वास्तविकता में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या होता है। तो इन्होंने पहला जो केस दिया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग। चलिए मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ सो दैट इट विल बी अ लिटिल क्लियर टू यू। So dear student, this is the case. So what is happening over here? Here the coil is stationary. It means the coil is not moving. But the magnet which is shown over here, right? This magnet which is shown over here is actually in the moving condition. One, please. Let me bring back the picture so that it will be clear to all of you. So this is what is happening. This is what is happening. I hope now the image is very much clear to all of you. Now, what is happening over here? If you can simply see, the situation here is clear. And what is clear in this image is that the coil is stationary and the magnet is moving. Primarily, it is moving towards the coil. If you see from here, the direction of the velocity is already indicated, and the north pole. If you simply see, the north pole is moving towards the coil. Right, the north pole is moving towards the coil. Just a while, please. Okay, dear students, if you see like the north pole is moving towards the coil. Now, what is happening when the coil is moving towards when the magnet is moving towards the coil? What is happening over here? If you see, the anti-clockwise current is visible when it is moving towards the coil. When the magnet is moving towards the coil, what is happening? The anti-clockwise current is getting produced, and when it is going away from the coil, the clockwise current is produced. I hope you already know, whenever there is a production of anti-clockwise current simply tends to the north pole, whereas clockwise current suggests us that it will be forming a south pole. So when the north pole is coming towards the coil, the north pole is getting produced because anti-clockwise current simply represents the north pole over here.
So once when you'll be bringing the north pole closer to the closer to the coil, what is happening? When the north pole is brought closer to the coil, anti-clockwise current is getting produced in the coil, which simply represents the north pole of the coil. So north and north will be repelling each other. But what is happening when the magnet is going away? जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाती है तो नॉर्थ पोल जब कॉइल से दूर जा रही है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट देखने मिल रहा है और क्लॉकवाइज करंट किसको डिपिक्ट करता है? साउथ पोल को। तो एक बात हमें समझ में आती है यहाँ पे कि जैसे ही हम नजदीक जाते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करती है, मतलब नजदीक जाने का विरोध किया जा रहा है, और जैसे ही जो नॉर्थ पोल है वो दूर जा रही है तो साउथ पोल बन रहा है। तो जब वो नॉर्थ जब दूर जा रही है और साउथ पोल बन रहा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना चाहिए, तो वो मैग्नेट के दूर जाने का विरोध कर रहा है। मतलब in both the cases when the magnet is coming closer, when the north pole is coming closer and there is a formation of the north pole in the coil, so north and north are repelling. It means when the magnet is coming closer to the coil is repelling the magnet. But when the magnet is going away from the coil, there is a production of clockwise current and hence south pole. So there is an attraction. So it do not allow the magnet to go away from it also. So it is not allowing to come closer. It is not allowing to go away. It means whatever is happening, whatever is the cause of the magnetic flux, right? Whatever is the cause of the magnetic flux, whatever magnetic flux is the cause of induced EMF. One thing is clear. Whenever there is a change in the magnetic flux, pay attention. Whenever there is a change in the magnetic flux, induced EMF will get produced. You already studied the definition. What is there in the definition, dear students? Let us be very clear with it. Whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux, there will be an induced EMF linked with the circuit. Now this is clear to us by the basic definition of electromagnetic induction. This is the basic definition of the electromagnetic induction. Now, what is the basic definition of electromagnetic induction? Let us be very clear with it again. That is, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil, there is the production of an induced EMF. Now, furthermore, let us move on to the next point. What is happening over here when you will be bringing the magnet closer to the coil? There will be the development of an anti-clockwise current. And whenever there is a development of anti-clockwise current simply represents the north pole. So when you'll be bringing the north pole, there is a production of north pole in the coil. North and north will be repelling. So it means when the magnet is coming closer to the coil is repelling that magnet. And when the magnet is going away from the coil, when the north pole is going away from the coil, there is a development of clockwise current. Clockwise current represents the south pole. So when the magnet is going away from the coil, there is a development of the south pole, and south and north will be attracting each other. So when the magnet is coming closer to the coil, it is repelling that magnet, and when the magnet is going away from the coil, it is attracting. It means whatever is happening, this particular coil is simply opposing that particular phenomenon. So initially, if you see what you can conclude with, if anyone may ask you that what is your final conclusion by seeing these phenomena happening over here, if anyone may ask you what is your conclusion to all these phenomena which are happening over here, so one thing is very clear: when the magnet is coming closer to the coil, it opposes the coming closer, and when it is going away from the coil, it is opposing the going away of the magnet. It means whatever the magnet is doing, this coil is simply opposing that phenomenon. And whenever there is a change in the magnetic flux, there will be the linking of the induced EMF. ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट जब नजदीक आ रही है, कॉइल उसके नजदीक आने का विरोध कर रहा है, और जब मैग्नेट दूर जा रही है तो कॉइल उसके दूर जाने का विरोध कर रही है। अब कॉइल जब नजदीक आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, कॉइल जब दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो वो मतलब मैग्नेट के फ्लक्स के नजदीक आने का भी विरोध हो रहा है, मैग्नेट के फ्लक्स के दूर जाने का भी विरोध हो रहा है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इट ऑलवेज ऑपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। समझिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जो कॉइल में बन रहा है, वो हमेशा अपने बनाने वाले का विरोध करता है। जब वो पास आना चाहती है मैग्नेट तो उसको दूर भेजता है, और जब वो दूर जाना चाहती है तो उसको पास भेजता है। इट्स जस्ट लाइक एन ह्यूमन फिनोमिनन। इंसान भी ऐसे ही करता है, जब कोई चीज पास आती है तो उसको दूर भगाना चाहता है, जब वो दूर चली जाती है कहता है अरे यार वो दूर कैसे चलेंगे, चलो पास लेके आते हैं। तो ये एक ह्यूमन फिनोमिनन टाइप ही अगर आप देखेगा तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको समझने की जरूरत है। ये जो बात है सबसे पहली बार किसने कही? लेंज ने कही। इसी को लेंज लॉ भी कहा जाता है।
लेंस लॉ ने क्या कहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, induced EMF always opposes the cause of its production. So this particular diagram depicts the same, right? This particular diagram depicts the same. So this is a first case which was told to us by माइकल फैराडे एंड हेनरी जोसेफ हेनरी, राइट। इन्होंने ये वाली जो फिनोमिनन है एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या था, स्टेशनरी थी क्या, कॉइल थी, और मूविंग क्या थी, मैग्नेट। लेकिन दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉइल के लिए मैंने 2 चक्के लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे जो कॉइल है उसको 2 चक्के लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैग्नेट तो स्टेशनरी है और उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरफ आ रही है और फिर मैग्नेट से दूर जा रही है। तो क्या होगा, जितनी जल्दी वो नजदीक आएगी और जितनी जल्दी वो दूर जाएगी, मतलब जो कॉइल की वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो आगे पीछे जाएगी उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो पहली चीज आपने समझी कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था, मैग्नेट पास आ रही थी, मैग्नेट दूर जा रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदल रहा था तो क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विल लिंक विद द कॉइल। फिर से सुनिएगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कब बदलाव होगा, जब मैग्नेट उस कॉइल के या तो नजदीक होगी और उससे दूर जाएगी, तभी तो बदलाव होगा ना। क्योंकि मैग्नेट से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉइल पे लगेंगी और उसके एरिया नॉर्मल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा। फिर से सुनिए, बहुत अच्छे से समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया नॉर्मली। मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आएगी, मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आएगी तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, जब वो दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा। इट सिंपली मीन्स कि बदलाव हो रहा होगा, जब वो नजदीक आएगी तो बढ़ रहा है, दूर जा रही तो घट रहा, मतलब क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लिंक विद द कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल से लिंक करेगी। तो जब तक ये बदलाव चलता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक होता रहेगा, और जैसे ही ये बदलाव रुक जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक होना बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने प्रोडक्शन के कारण का, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसको बनाने वाले का, प्रोडक्शन के कारण मतलब उसको बनाने वाले का विरोध करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लिंक विद द कॉइल। जब तक निरंतर बदलाव होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तब तक क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कॉइल से लिंक करेगा। जितना ज्यादा बदलाव होगा, जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेस्ट पे है लेकिन कॉइल क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो जितनी जल्दी जल्दी ये कॉइल मूव करेगी, जितना ज्यादा यहाँ मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। मतलब व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विल लिंक विद द कॉइल। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट लिंक होगा कॉइल से। दूसरी चीज, जितना ज्यादा बदलाव होगा उतना ज्यादा लिंक होगा। और तीसरी चीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने बनाने वाले का विरोध करता है। ये किसने बोला, लेंज ने बोला। शुरू के 2 स्टेटमेंट किसने बोले, माइकल फैराडे ने कहे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी जो चीज है आप देखिएगा तो यहाँ पे तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। मान लीजिए आपके पास एक, आपने एक कंडक्टर लगाया हुआ है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंडक्टर ने एक इंसुलेटर लगाया हुआ, उसमें आपने तार को लपेट दिया, 2 अलग अलग तारों के कॉम्बिनेशन आपने बनाए, ठीक है। पहला वाला जो तार है उसमें आपने बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है और उसमें आप बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं। जब ये पी मतलब प्राइमरी जो कॉइल है, जहां 2 कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, जब आप उसमें करंट देंगे तो इस करंट के कारण आप जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने क्या पढ़ा था कि जब भी करंट कहीं फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का को बनाता है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में सेकेंडरी कॉइल से लिंक होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है कि जब भी करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होगी, सेकेंडरी कॉइल से। और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड में निरंतर बदलाव होगा, लगातार बदलाव होगा। निरंतर मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सेकेंडरी कॉइल में
इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, करंट किस में फ्लो कर रहा है, प्राइमरी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी कॉइल की, फ्लक्स इसके कारण फ्लक्स बन रहा है, और ये फ्लक्स लिंक किससे हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल से क्योंकि ये फ्लक्स लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से ये फ्लक्स जो है वो लिंक हो रहा है, तो क्या होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी कॉइल्स में ये फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, तो इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। किस में बनेगा, सेकेंडरी कॉइल में। करंट फ्लो किस में हो रहा है, प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक होना, और फ्लक्स लिंक होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ का बनना, ये भी हमें बताया गया। और ये हमारा एक्चुअली देखा जाए तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में चीजों का बदलाव हो रहा है, जिसका म्यूचुअल इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल में देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों को समझ में आते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, पहला ये कि whenever there is a change in the magnetic flux, induced EMF and hence induced current will link with a closed circuit, पहली चीज। the rate of change of induced EMF is directly proportional to the change of magnetic flux. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव आएगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। मतलब अगर फ्लक्स में बदलाव नहीं आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं बनेगा। If there is no change in the magnetic flux, no induced EMF will be produced. Third thing, which was said by Lenz, that is induced EMF always opposes the cause of its production. Induced EMF हमेशा उसके बनाने वाले का विरोध करता है। तो इस तरीके से 3 चीजें हमें देखने मिलती है। मैं इसका डायग्राम आपको एक बार दिखा देता हूँ। Let us move with this particular diagram. Let me take you to the diagram first. Sorry, dear students, it was not a diagram, it was a photo, I should say. I said it to be the diagram. I'm sorry, it's not a diagram, it's a photo. Right? So I'm just sharing that photo with you so that we can study it a little thoroughly. So dear students, for the purpose of writing your notes, this is what is mentioned over here. From these experiments, we may conclude, if you see, it is already written over here, and I already explained to you, this is what I'm talking about. So what I'm talking about is, let us talk about it. What is written over there? Let's talk about it. Whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, जब भी magnetic flux closed circuit पे जो link है वो बदलेगा, and induced EMF and hence induced current is set up in it. जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सर्किट से लिंक जो है वो बदलेगा, तो ईएमएफ और या इंड्यूस करंट जो है उसमें कॉइल में बनेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला बदलाव इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट का कारण होता है। ठीक है, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट, द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। मतलब 2 चीजें, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब बनेगा जब फ्लक्स में बदलाव होगा, जो पहला पॉइंट है, और दूसरी चीज, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। पहली चीज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, कब बनेगा, जब फ्लक्स में बदलाव होगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा बदलाव होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। चलिए, ये 2 चीजें हो गई। अब इसी को स्टडी करते हुए ये लॉज दिए गए। यहाँ पे 2 लॉज हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूँ, या 2 डिफरेंट लॉज हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ है। एक्चुअली लॉ तो 3 है, लेकिन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉज है। यहाँ पे जो 2 डिफरेंट टाइप्स के लॉज हैं वो हैं, there are 2 different types of laws which govern the phenomenon of electromagnetic induction. पहला जो लॉ है वो फैराडे ने दिया। पहले जो 2 लॉ है वो फैराडे ने दिए। वो क्या है लॉ, वो कैटेगरी क्या है? फैराडेज लॉ which gives the magnitude of induced EMF and Lenz law which gives the direction of induced EMF. तो 2 लोगों ने लॉज दिए, फैराडे ने 2 लॉ दिए। ठीक है, और उनके जो दोनों लॉ है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड है, जबकि लेंस लॉ जो है वो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट इट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसके विषय में बात कर लेते हैं। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट is induced in it, which lasts so long as the change in the flux taking place. The phenomenon is called electromagnetic induction. जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की। क्या बात की? कि जब तक फ्लक्स में बदलाव होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक बनता रहेगा जब तक फ्लक्स में बदलाव होता रहेगा, और जब फ्लक्स में बदलाव होना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनना
बंद हो जाएगा। इनका दूसरा लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। तो दो चीजें कही माइकल फैराडे ने, पहला तो उन्होंने ये कहा कि फ्लक्स में बदलाव होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक बनता रहेगा जब तक फ्लक्स में बदलाव होता रहेगा। दूसरी चीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना बनेगा जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा। पहली चीज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है, और दूसरी चीज कितना बनेगा, उतना बनेगा जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा। तो ये दोनों लॉ माइकल फैराडे ने दिए। मैग्नीट्यूड दैट इज ई, magnitude of E is equal to d phi by dt. d phi by dt means change in flux with a change in time. Now दूसरी चीज है लेंज लॉ। लेंज लॉ के विषय में बात कर लेते हैं। This law states that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. That is, it opposes the change in the magnetic flux. शायद आपको याद हो, मैंने आपसे बताया था कि मैग्नेट जैसे ही कॉइल के नजदीक आती है तो वो कॉइल जो है उसमें नॉर्थ पोल का डेवलपमेंट हो जाता है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल एक दूसरे को रिपेल करने लगती है। सिमिलरली जैसे ही वो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट की वो दूर जाती है तो कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगता है। क्लॉकवाइज जो करंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब नॉर्थ पोल दूर 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 जाती है तो जो कॉइल है वो साउथ पोल बन जाती है, उसमें साउथ पोल हो जाता है, तो साउथ और नॉर्थ क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती है। तो पहले मैग्नेट नजदीक आ रही थी तो उसके नजदीक जाने का विरोध किया जा रहा था, और फिर जब वो मैग्नेट दूर जाने लगती है तो उसके दूर जाने का विरोध किया जा रहा है। इनडायरेक्टली अगर बात किया जाए तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसके कॉज ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। जब मैग्नेट नजदीक आती है तो नजदीक आने का विरोध करता है, और जब मैग्नेट दूर जाती है तो उसके दूर जाने का विरोध करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं लेंज लॉ को भी। अगर हम बात करें मैथमेटिकल फॉर्म इनका, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर हम इसमें से मैग्नीट्यूड हटा देते तो लगा देते हैं माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने फ्लक्स का चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है, मतलब लेंज लॉ को फॉलो करता है। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर मान लीजिए आपकी कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। डी फाई का मतलब होता है फाई टू माइनस फाई वन, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स भी लिख सकते हैं आप। डी का मतलब है टाइम में आने वाला बदलाव। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली इन चीजों को लिख सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेंज लॉ, वही जो मैग्नेट में मैंने अभी आपको बताया वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगा। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current in the circuit is such that it opposes the cause or change which produces it. लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, जो करंट का डायरेक्शन, जैसे आपने देखा पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, तो इन्होंने यही कहा है लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वही पहले जो क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल जब नजदीक जा रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट बन रहा था, और जब आप नॉर्थ पोल दूर जा रही थी तो क्लॉकवाइज जो करंट बन रहा था। तो इन्होंने यही कहा लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्किट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज और द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो इन्होंने भी वही बात कही कि जैसे ही आप नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आ रहे थे कॉइल में तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को बना रही थी। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सिमिलरली जब मैग्नेट का नॉर्थ कॉइल से दूर जा रहा था तो जब वो दूर जा रहा था तो क्लॉकवाइज करंट देखने मिलता है। क्लॉकवाइज करंट जो है वो साउथ पोल को डिपिक्ट करता है, तो साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। तो अब वो मैग्नेट को दूर नहीं जाना देना चाहता क्योंकि साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। तो सिमिलरली वो ये कहना चाहते हैं लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज और द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी? हम लोगों ने पहले नंबर पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके कारण क्या होता है कि फ्लक्स के बदलाव के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेवलपमेंट होता है क्लोज सर्किट में। ठीक है, इसकी जो खोज है, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो खोजी गई वो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के द्वारा खोजी गई। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है फ्लक्स। फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया नॉर्मली। इसको फाई से डिनोट किया जाता है। फाई जो है फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब बी पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया नॉर्मली, दैट इज ए। So phi is equal to b into a, or you can write phi is equal to b vector dot a vector, or you can write it to be as, you can simply write it to be as phi is equal to
b cos थीटा विद a, राइट। इसका जो यूनिट होता है बच्चों, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वो होता है हमारा वेबर, राइट, एंड फाई इज इक्वल टू बी ए, सो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर। सीजीएस में इसका यूनिट होता है 1 मैक्सवेल, तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अगर बोला जाता है कि वेबर में और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। So my dear students, with it I'll be ending the class. Have a great time ahead. इन सब चीजों का आपको एक बार रिवीजन करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, किसी चीज के बारे विषय में आप पूछना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क, राइट। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप इस विषय में पूछ सकते हैं, there's no problem, it's entirely upon you. Whenever you'll be having any type of doubt, you can put forward. With it I'll be ending the class. Have a great time ahead. Enjoy the day, dear students.